Yes, till now we have discussed till spiral model, right? So in a spiral, just go through once. What we studied? We studied there will be four quadrants. It means, see, this is one loop, and this one loop is itself called as the one phase, right? First phase is feasibility phase. So this whole loop is mm, talking about the feasibility phase. Next loop talking about the next phase, that is requirement, right? And each phase is divided into four quadrants, where each quadrant has their separate work, right? So first quadrant is determining the objectives and identifying the risk. What in this phase, what we have to do, that will be done, that will be determined in this phase, and all the risk associated with this phase is also identified in this phase, right? And in the next phase, all the risks which have been identified are resolved. Right, then the working of that phase will be done in the third quadrant. Next, customer feedback will be taken. If customer feedback is not good, same process is repeated for the same phase. We are not going to enter into second phase, but we will repeat the same phase. Whenever the feedback or the evaluation is okay, then only we will shift to the next phase, right? So this is how a spiral model works. Till this we have studied. See, objective is what? First one, identify objective, risk associated, alternate solutions. Yeah. So second quadrant deals with all the solutions related to those risks which have been analyzed till that or till now. Okay. देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, डेवलप करो, वैलिडेट करो। उसके बाद रिव्यू होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कि इज इट ओके, मींस कस्टमर फीडबैक इज टेकन, एंड इफ the phase work is done, then only we are going to shift to the new phase, or we'll do the same processes again, right? One more thing, spiral model is called as the meta model. This is what I wanted to discuss, and for that I have repeated the spiral model. Okay, spiral model is called as the meta model also. Why? Because it contains itself all the phases. How? See, see here what it is written. Let's suppose risk क्या आई है, requirements are inappropriate. मीन्स जो भी requirements gathering की गई हैं उसके basis पे we are not going to develop, or the company is not be able to develop the whole product or the whole software. मीन्स इससे हमें क्या आइडिया लगा, इसके जस्ट बाद हमें प्रोटोटाइप सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और प्रोटोटाइप मॉडलिंग फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बहुत हद तक क्लियर नहीं है कस्टमर की। करेक्ट, हो सकता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी कंपनी को क्लियर ना हो, any kind of requirement can be it is, so that is why we have to follow the prototype system. Correct. Let's suppose if the customer wants, let's suppose if the customer wants that the key features should be implemented first and to be deployed to me or deployed to the customer or whatever you say. And in that case, after analyzing the whole
first phase and all the quadrants, it will be analyzed that evolutionary model are to be followed from now. That then we are going to implement the evolutionary type of model, correct? एंड इफ अगर आप सपोज करो कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स एवरीथिंग प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है, क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स आर पूरी तरीके से गैदरिंग कर ली गई है, इट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके, देन वी आर गोइंग टू फॉलो द व्हाट इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, राइट? सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, based on the first phase and all the four quadrants have been analyzed, and based on the all four quadrants analyzation we are able to determine later which model are to be followed. So we can here say that all the models are submerged in this model, or we can say that spiral model can be called as the meta model, right? अभी क्लियर हो गया होगा क्यों इस मॉडल को मेटा मॉडल कहते हैं। यस, देखो क्या कह रहा है, अगर सिंगल लूप इस सब एक ही लूप हर बार फॉलो हो रहा है एक फेज के लिए, दैट सिंपली रिप्रेजेंट दैट इज वाटरफॉल मॉडल। इवोल्यूशनरी अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोटोटाइप मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं। कब? जब रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और यूज़र रिक्वायरमेंट्स दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर क्लियर नहीं होगी, देन प्रोटोटाइप मॉडल इज सुटेबल, राइट? हाँ, ये कंपैरिजन है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ आस्क्ड ऑल द टाइम। कंपैरिजन ऑफ ऑल द मॉडल्स, इसमें देखो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल होगा एक, प्रोटोटाइप मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल एंड देन स्पाइरल मॉडल। इन चारों में आपको कंपैरिजन बताना होगा, राइट? कंपेयर करके सॉरी। सो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल मीन्स इज मोस्ट वाइडली यूज, वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर एवरीथिंग इज़ too much clear, सारी requirements and the whole process and the problems and the customer feedback, everything is okay, everything is too very much clear to the company or to the team who is developing the software. Prototype model is suitable जहाँ पर प्रोजेक्ट्स को समझ नहीं पाते हैं कंपनी वाले, और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती हैं, या फिर यूज़र रिक्वायरमेंट क्लियर, कस्टमर अच्छी तरह बता नहीं पाता है कि वो क्या डेवलप करवाना चाह रहा है। इवोल्यूशनरी मॉडल कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर बहुत लार्ज प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं और इंक्रीमेंटेड फॉर्म में हम डिलीवर करते हैं किसको? सॉफ्टवेयर को। इंक्रीमेंटेड फॉर्म का मतलब इंक्रीमेंटली इम्प्लीमेंटेड फॉर्म का मतलब होता है वर्जन्स में वी आर गोइंग टू डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर, वर्जन V1 V2 V3 वर्जन्स में, राइट? द लास्ट वन इज स्पाइरल मॉडल, जहाँ पर रिस्क आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वी गो फॉर द स्पाइरल मॉडल, एंड फ्रॉम स्पाइरल मॉडल वी कैन शिफ्ट टू एनी अदर मॉडल, उसके दैट इज़ वाई स्पाइरल मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेटा मॉडल। ओके देन, सो ये आपकी स्लाइड्स फिनिश हो गई, ये वाली भी। अब नेक्स्ट पीपीटी कल से पढ़ेंगे हम लोग, राइट? ओके, थैंक यू।